So family background is more or less science. So मैं मेरे second year graduation से ही I started taking MBA के coaching classes for entrance examination. Okay. And I would be competing with the people who have 2 or 3 years of experiences. We were around 180 students का batch था. Growth doesn't make any sense if you are not learning anything new. Okay, it is always suggested for a fresher that you should be going in an Indian banks or in Indian companies. Freshers जो आते हैं they hop a lot. Okay, इस 4 साल का एक्सपीरियंस एंड आपको 20 लाख का पैकेज है. जस्ट थिंक फॉर योर सेल्फ कि 9 to 5 नॉर्मली 9 to 5 कभी होता नहीं है. Okay, maybe the people who want to pursue MBA, what is the suggestion for you? Okay, so मेरा my background is I've done BMS from MS University Baroda, then MBA. My elder sister, she's done pathologist, and my father has done dentistry. So family background is more or less science. Okay, but then I was never a scholar. Okay, I was an average student. Okay, so 50-60% वाला होता था. Okay, and so parents were a little worried because my elder sister, she was a rank holder. First second में ही उसका आता था. Okay, और I am always a notorious child, second वाला. Okay, so then they said कि तुम commerce ही कर लो, so it would be better stream. Okay, and then move ahead with whatever goes in your life. That was the thought process. Coming back to school, okay, तो school में मैंने जो भी मेरा ग्रुप था उसमें half people were commerce and half people science. So I took commerce. फिर बाबा चलो commerce है, I have a various options. Science में probably I was doubtful. And anyway, his parents were more confident on me to do commerce rather than science. So I took 11th 12th in commerce. Okay, of course 11th में मुझे धक्का लगा था because commerce is a damn dry subject. Economics पल्ले नहीं पड़ता है. 11th 12th commerce किया. 12th में I was a rank holder in the school. Okay, I did worked hard, and then I in Gujarat. So my schooling 11th and 12th schooling is in Gujarat. Okay, 12th में okay the results are out, and that time we were supposed to secure admission in a college. बड़ौदा में there is a MS University. Okay, जिसके results सबसे last आते हैं. Okay, so you don't know if you don't get admission over there in BMS. Okay, then you get stuck BCom में. And I was quite clear from the very beginning only कि मुझे MBA करना है, उसके पहले मुझे BBA करना है. So BBA BMS बॉम्बे में it's said BMS, बड़ौदा में या गुजरात में BBA बोलते हैं. So मैंने अहमदाबाद में सोम ललित में I took the admission and secured my admission over there. Then वापस MS यूनिवर्सिटी में मेरा लग गया admission. I got into payment quota. Okay, so payment quota is 16,000 per annum, and so but then anyways hometown staying with parents is always मतलब preference वैसा रहता है. And anyways I was not that matured enough कि बाबा out of city जाऊं. अहमदाबाद is still nearby, तो मैंने सोचा कि चलो try कर सकते हैं. इन बाद में जैसे जैसे सीट्स भरने लगते हैं there are people who would be moving out from general quota also. Then payment का upgrade होता है general. I was the last person who got converted into general quota. तो मेरे पैसे बच गए उसमें. And it was 8,000 per annum. So it's pretty reasonable fees. Okay, I don't know, right? I'm talking with reference 2001 to 2003 batch. अभी 2023 में I don't know क्या systems है. Then so MBA करना था, and I first year BMS, second year I was consistently a rank holder. मतलब obviously first rank in boys, मेरे आगे सब 9th rank was the girls. Then so thing is कि if you want to save your 1 year in graduation, normally trend कैसा होता है कि लोग graduation complete करते हैं commerce graduation, then they prepare for MBA. Okay, they take a break of 1 year or 1.5 साल, and then they go into a good decent colleges. मेरे केस में I was quite clear कि मुझे breaks life में नहीं चाहिए. So मैं मेरे second year graduation से ही I started taking MBA के coaching classes for entrance examination. And after third year I completed my third year, and immediately after 2-3 months I secured into ITM Navi Mumbai. वहाँ पे मेरा हो गया graduation in Baroda and post graduation in Navi Mumbai without a break. Okay, yeah, it's quite टफ. बहुत मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी कॉलेज में आप जाते हो वहां पे एकेडमिक्स पहले देखते हैं. ओके, सो इट्स नॉट कि एकेडमिक्स आर
आई मीन यू शुड एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, जो मैंने नहीं किया है, आई एग्री टू इट, यू शुड एंजॉय, बट एट द सेम टाइम एकेडमिक्स में वीक नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरे केस में मैं एक साल बचाने की वजह से मेरे जो एंट्रेंस एग्जाम्स के स्कोरिंग्स जो आते थे दैट वाज समथिंग अराउंड 60% 70% वैसे ही आता था। 60-70% में यू कैन नॉट गो इनटू बी प्लस ग्रेड कॉलेज। ओके, सो यहाँ पे आईटीएन में दे गिव अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस टू एकेडमिक्स, तो उस हिसाब से मेरे आई जस्ट क्लियर देयर ये जो 60 या 70% एग्जामिनेशन कट ऑफ है वो बेयर मिनिमम मैंने कट ऑफ क्लियर कर लिया। ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यूज, तो इंटरव्यूज में सिंस माय एकेडमिक्स वर क्वाइट स्ट्रांग, आई प्रेजेंटेड माय रैंक होल्डर सर्टिफिकेट्स, तो मुझे काफी अच्छा पड़ा, मतलब आई वेंट थ्रू द आईटीएम। So, so working started with the campus recruitment only. Okay, उसमें so before that there is equal important. See, MBA में या post graduation में obviously important is to clear that examinations. Okay, but simultaneously अगर आप additional certifications करते हो during the period, because first year is a struggle in MBA. Either you take अपना engineering student के लिए या commerce या जो भी है. Okay, कॉमर्स में है तो एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट सारे रिविजन हो जाते हैं, तो मुझे इतना स्ट्रगल नहीं होता है। बाकी कोई भी स्ट्रीम अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड कोई भी होगा, इंजीनियरिंग या डॉक्टर्स, इवन डॉक्टर्स भी आते हैं एमबीए करने के लिए, सो उनके लिए काफी स्ट्रगल होता है। सो इफ यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड यू हैव एडवांटेज कि आपके सारे कंसेप्ट रिविजन हो रहे हैं, हेंस वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टू डू एडिशनल सर्टिफिकेशंस। मैंने दैट टाइम NISM कैपिटल मार्केट अपना NSE स्टॉक एक्सचेंज के कोर्सेज है, NISM के कोर्सेज है, ऑलमोस्ट 6 to 7 सर्टिफिकेशंस मैंने करके रखे हुए थे। ओके, नाउ मेरे लिए कॉम्पिटिटर्स कौन है? ओके, आई एम अ फ्रेशर, जस्ट पास आउट ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट एंड देन इमीडिएटली MBA में लिया हुआ है एडमिशंस। ओके, एक्सपीरियंस वाइज एब्सोल्युटली निल। ओके, एंड आई वुड बी कॉम्पिटिंग विद द पीपल हु हैव 2 or 3 years ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो मेरे लिए वो स्ट्रगल था। बट विद दीज सर्टिफिकेशंस मुझे इमीडिएटली आई गॉट इनटू कैंपस रिक्रूटमेंट। फर्स्ट वाज TCS जो खाली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लेते थे, उसमें मेरा नहीं लगा। ओके, बिकॉज आई वो बाहर ही निकल जाता हूँ। सेकेंड वाज डी शॉ, उनके क्राइटेरिया भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही चाहिए थे विद MBA, सो देन उसमें भी नहीं लगा। थर्ड वाज HDFC बैंक। ओके, वी वर अराउंड 180 स्टूडेंट्स का बैच था, उसमें से 80 to 100 स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर द इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशन, उसमें से 11 सिलेक्ट हुए, फ्रॉम दैट आई वाज द वन ऑफ देम। ओके, और मेरे साथ there were freshers also, but then maximum were experienced people. So my point is कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त if you get time, okay, then go for additional certification, because ultimately आपके resume screening होते हैं, तो resume में आपने additional certifications लिखा होता है, तो it helps you all. I started my journey with HDFC in 2006. 2015 I changed to United Parcel Service. Okay, HDFC बैंक में आई स्टार्टेड विद रिटेल ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज पॉइंट इज के सेल्स आ जाता है, आई एम अ फाइनेंस बैकग्राउंड। ओके, सो देन आई आफ्टर 1 year आई मूव्ड एज अ रीजनल कोऑर्डिनेटर। वहां पे आई नीड टू कोऑर्डिनेट एंड मोर इनटू MIS एंड रिपोर्टिंग स्टफ, वो करीब 6-7 साल किए। देन वापस जॉब मोनोटोनस हो गया। ओके, ऑल्दो आई कैन गेट अ ग्रोथ इन दैट प्रोफाइल, बट द पॉइंट इज के growth doesn't make any sense if you are not learning anything new. Okay, so then I moved back to branch banking as a branch operations manager. वहां पे thought process was very clear, operations है, operations handle हो जाएगा, sales handle नहीं होगा। but the point is कि now under you there are sales people, you are an operations manager, आपके अंदर sales के बंदे हैं, and you can't lead them by leadership and all that stuff. Okay, because आप खुद अगर demonstrate नहीं कर पाओगे तो आप आपके बच्चे लोग को क्या सिखाओगे? Hence operations में भी I did for 3.5 years, and then I moved to United Parcel Service in 2016. Okay, वहाँ पे I used to handle reporting stuff. Pretty decent organization, but it is always suggested for a fresher that you should be going in an Indian banks or in Indian companies. Okay, the initial years, जो भी आपके initial years के periods होते हैं, उसमें आपकी struggle काफी हद तक होती है, but the point is you are more trained and you are more grinded. Okay, जिससे आपके rest of the years are pretty smooth and ultimately you are dealing with people. आप लोग से बात करते हो, तो it is always better कि आप you interact with more and more with people. Okay, जिससे आपका overall development होता है, because initial years में आपके profiles और वो सब काफी narrow होते हैं, and as you grow up in the ladder you need to understand कि आपको लोगों से कैसे बात करनी है, आपको juniors को handle करना होता है। I would only say अभी के
thought process is, I mean, freshers जो आते हैं they hop a lot. Okay, I probably I'm more orthodox in that manner. Okay, I do not believe in hopping. Okay, हाँ आप hopping makes sense. Okay, when you have learned really decent. Okay, you have a grip. There is there is no new learnings. Then you hop. Okay, बिकॉज आप अगर इनिशियल ईयर्स में पैसे के पीछे भागते हो एंड यू डू हॉपिंग, ओके, प्रोबेबली अभी तो ट्रेंड हो चुका है कि 2 साल के बाद एवरी मोस्ट ऑफ द पीपल चेंज, तो पीपल डोंट टेक इट प्रॉपरली, आई मीन दिखता नहीं है बिकॉज नॉर्मली सबके रेज्यूमे में हॉपिंग ही दिखता है, बट द पॉइंट इज कि लॉ ऑफ एवरेजेस वर्कआउट इन योर सैलरी पैकेजेस. ओके, इनिशियली आप अगर फॉर यू स्टार्ट विद 10 lakh का पैकेज या 8 lakh का पैकेज एंड इमीडिएटली आफ्टर 2 years you hop and you probably you get something 14-15 lakhs, then again within 2 years you hop and you get 16-17 lakhs का पैकेज. द पॉइंट इज 4 साल का एक्सपीरियंस एंड आपको 20 लाख का पैकेज है. जस्ट थिंक फॉर योर सेल्फ कि whether you are justifying that package, because otherwise law will average will work out. Okay, at some point in your life, okay, you will move out of the organization and you will have to struggle to justify yourself कि मेरा पगार 20 लाख का है and nobody would be accepting you. So वो my experiences मेरी लाइफ में वैसा हो चुका है. That's precisely I'm telling कि law of averages work out. मैं 9 to 5 normally 9 to 5 कभी होता नहीं है. Okay, you start at 9 o'clock but 5 तो कभी I don't recollect if I left at 5 o'clock in any of my organizations. Okay, except the current one. Okay, wherein it's an afternoon shift. So मुझे morning का time मिलता है. But then work life balance was tough. Yeah, I mean genuinely tough if you think of a private banks or probably private organizations. But at the same time you learn a lot also. Okay, so as long as you are not married or as long as you are not committed, okay, then you don't think कि बाबा मुझे इस लॉक करना पड़ रहा है and all, because ultimately that will benefit you only. Okay, probably there are some cruel managers also. Okay, but ऐसे भी बंदे आपको मिलने चाहिए इन योर लाइफ, सो दैट अगर आपको कोई अच्छा मिलता है तो आपको समझ होनी चाहिए कि दिस पर्सन इज गुड एंड ही इज नर्चरिंग यू. बिकॉज जब तक आपको फटके नहीं मिलेंगे तब तक आपको पता नहीं चलता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है. People who are pursuing MBA right now or probably the people who want to pursue MBA, what is the suggestion for you? Okay, गुजराती में जनरली MBA का फुल फॉर्म होता है मन्ने बधु आवड़े છે. Okay, that is exactly what is expected from you. Okay, probably you may not, आपको कोई भी एक चीज में मास्टरी नहीं होगी. Okay, but आपको सब कुछ आना चाहिए. Okay, because point is के MBA करने के बाद, okay, people would expect everything from you. Okay, probably a learning also. So बिकॉज अगर एक चीज में मास्टरी होती, इफ यू आर रियली गुड इन योर सॉफ्टवेयर स्पेशलाइजेशन या कुछ भी चीज के लिए, ओके, बट अल्टीमेटली अगर इफ यू डोंट नो कि लोगों से कैसे डील करना है, interact with the people, making more and more friends, okay, socializing, networking, okay, it doesn't make any sense in life. That is the basic stuff we require, because ultimately see socializing, networking is the basic requirement. Even if you want to change your job, okay, अगर लोग आपको पहचानते होंगे तो you will immediately move. लोग अगर आपको पहचानते होंगे तो वो recommendation देंगे, and that is what has happened in my case. My colleagues know me and they have pulled me in this new organization. So point is MBA is good, you should, but you should be knowing what is MBA and you should be learning everything and socializing, because MBA, so books are not the only thing in life. Okay, you have to socialize with everybody.